In Paramecium, conjugation is a form of sexual reproduction. It is a temporary union of two individuals of the same species for mutual exchange of genetic material. The continuous multiplication by binary fission is interrupted by conjugation as it is necessary for the survival and rejuvenation of the race. Conjugation inducing factor. Following are the factor which induces conjugation. First, the unfavorable condition of some degree like starvation, shortage of food, a particular bacterial food, certain range of light and temperature, certain chemical induces conjugation. Conjugation is induced after a certain number of asexual binary fission, which is said to be approximately about 300 times when it has divided by asexual binary fission. In order to rejuvenate itself, it reproduces sexually by conjugation. In conjugation process, the two paramecium of opposite mating type come in contact with their ventral surfaces during swimming. They stick together through their oral groove region. Following this attachment, their cilia, trichocyst, feeding apparatus degenerate. The pellicle and ectoplasm also degenerate at the point of contact and a cytoplasmic or a protoplasmic bridge is formed. This bridge is also known as the conjugation bridge. These united paramecia are called the conjugant. As you can see in the diagram, the two paramecia of opposite strain, they unite, macronucleus disintegrate, micronucleus divides, and 4 micronucleus is formed in each paramecia. Out of these 4, 3 in each paramecia disintegrates. The one remaining micronucleus divides unequally to form a male pronucleus and a female pronucleus. The male pronucleus of each goes into the other by a cytoplasmic bridge and form a zygote. Now after the formation of zygote, they separates, they divide by 3 successive division, produces 8 nuclei. Of these 8, 4 enlarges and become the meganucleus. Of the remaining 4 micronucleus, 3 disintegrates. Then by mitotic division, the 1 micronucleus becomes 2, and now by binary fission, 2 daughter paramecia are formed, each having 2 macronucleus and 1 micronucleus. They again divide, micronucleus divide with the division of each daughter paramecia, and thus 4 paramecium are formed. Changes in micronucleus. The diploid micronucleus in each conjugant grow in size and divide by mitosis. As a result of meiotic division, 4 haploid daughter micronuclei are produced. Out of these 4, 3 degenerate and disappear. The remaining 1 micronucleus divide by mitosis to form 2 unequal pronuclei or gamete nuclei. The smaller gamete nuclei is active and migratory in nature and is called the migratory gamete nucleus or the male pronucleus. The larger gamete is passive and stationary in nature and is called stationary gamete nucleus or female pronucleus.
The migratory gamete nucleus of one conjugant passes through the protoplasmic bridge into the other conjugant and fuses with its stationary gamete nucleus. The fusion results in the formation of a single diploid zygote nucleus. This zygote nucleus is also known as the synkaryon, and this process of complete fusion of two nuclei from two different individuals to form a zygote nucleus is called amphimixis. After the formation of zygote nucleus, the attached conjugates separate and now they are called X conjugate. The zygote nucleus in each X conjugate divides 3 times by mitosis, forming 8 nuclei. 4 of these 8 nuclei grow in size to become macronuclei. The remaining 4 small nuclei are called the micronuclei. Out of the 4 micronuclei, 3 degenerates and disappears, and the remaining 1 micronucleus divide mitotically to form 2 micronuclei. This simultaneously, the X conjugate also divide into 2 daughter paramecia. Each daughter paramecia from X conjugate has 2 macronuclei and 1 micronuclei. The micronuclei of daughter individual again divides mitotically with the division of cytoplasm to produce 4 daughter individual, each with 1 macronucleus and 1 micronucleus. In this way, 8 paramecia are formed as a result of conjugation, 4 from each mating conjugate. The significance of conjugation. First, nuclear reorganization. In conjugation, new and metabolically active macronucleus is produced by reorganization of micronuclear material. Rejuvenation in conjugation. Old, weak, and defective macronucleus is replaced by new one, which can control metabolism, growth, and environment. Because of this, paramecium is rejuvenated, it regains its previous vigor. In conjugation, genetic materials are exchanged between the paramecium of opposite mating type. It brings variation in the daughter individual. संयुग्मन कार्य रूप से जटिल प्रक्रिया है और इसे नियंत्रित करने वाले कई कारक एवं परिस्थितियां होती हैं। जैसे संयुग्मन हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है। भोजन की कमी या विशेष प्रकार के जीवाणु खाने पर ही संयुग्मन की क्रिया होती है। किम्बल के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में पैरामीशियम विशिष्ट रसायन के स्रावन करते हैं जो कि संयुग्मन के लिए प्रेरित करते हैं। संयुग्मन के लिए तापमान की एक निश्चित सीमा होना आवश्यक होता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम में संयुग्मन हमेशा अंधेरे में ही होता है। संयुग्मी पैरामीशियम सामान्यतः आकार में छोटे होते हैं। संयुग्मन से पूर्व पैरामीशियम भोजन बंद कर देता है, अतः इसकी उपापचय दर काफ़ी घट जाती है। संयुग्मन करने वाले पैरामीशियम समयुग्मी होते हैं। ये एक ही सहजाति तथा अलग अलग संगम प्रकार के होते हैं। संयुग्मन कई पीढ़ियों तक लगातार द्विविभाजन द्वारा जनन करने के कारण पैरामीशियम की जनन क्षमता का ह्रास होता है और इस प्रकार संयुग्मन द्वारा वह अपना पुनर्यौवन प्राप्त करते हैं। संयुग्मन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है यह हम इस चित्र से समझ सकते हैं। 2 पैरामीशिया जो कि एक जाति के हैं लेकिन अलग
टाइप के या प्रकार के होते हैं, यह आपस में संयुग्मन करने के लिए एक दूसरे के मुखीय खांच द्वारा अधर तल से जुड़ जाते हैं। इनके सील या ट्राइकोसिस्ट, फूड धानियाँ आदि सब विलुप्त हो जाती हैं और मैक्रोन्यूक्लियस भी विलुप्त हो जाता है। इनमें उपस्थित माइक्रोन्यूक्लियस 2 बार विभाजन कर 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण करता है। इनमें से एक विभाजन समसूत्री विभाजन होता है और एक विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी एक माइटोटिक डिवीजन है और पहला डिवीजन मियोटिक डिवीजन होता है और दूसरा विभाजन समसूत्री यानी कि माइटोटिक डिवीजन है, जिसके कारण 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं। इन 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई प्रत्येक पैरामीशिया में से विलुप्त हो जाते हैं। शेष बचे एक माइक्रोन्यूक्लियाई दोनों में वह अनइक्वल असमान विभाजन कर एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस और एक छोटा माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। यह प्रोन्यूक्लियस कहलाते हैं, नर और मादा प्रोन्यूक्लियस। जो बड़ा आकार का प्रोन्यूक्लियस होता है वह मादा प्रोन्यूक्लियस कहलाता है और छोटे आकार का प्रोन्यूक्लियस नर प्रोन्यूक्लियस कहलाता है। दोनों ही पैरामीशिया के नर प्रोन्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक ब्रिज से होते हुए मैक्रोन्यूक्लियस या फीमेल प्रोन्यूक्लियस द्वारा संयुग्मन फ्यूजन करते हैं। इस प्रकार से बना जाइगोट सिनकैरियन भी कहलाता है। अब दोनों कॉन्जुगेंट अलग हो जाते हैं और इन्हें एक्स कॉन्जुगेंट कहा जाता है। अब यह 3 बार डिवाइड करते हैं, जिसके फलस्वरूप 8 माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है। इन 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 4 माइक्रोन्यूक्लियाई एनलार्ज होते हैं यानी साइज़ में बड़े होते हैं और इन्हें हम मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। शेष 4 माइक्रोन्यूक्लियस में से 3 माइक्रोन्यूक्लियस विलुप्त हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। ये बचा हुआ एक माइक्रोन्यूक्लियस समसूत्री विभाजन द्वारा 2 माइक्रोन्यूक्लियस का निर्माण करता है। अब यह पैरामीशिया विभाजित होकर 2 पैरामीशिया का निर्माण करता है। माइक्रोन्यूक्लियाई इन पैरामीशियम में फिर एक बार डिवाइड करते हैं और अब प्रत्येक पैरामीशिया में एक एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक एक माइक्रोन्यूक्लियस आ जाता है। यहाँ पर 2 मैक्रोन्यूक्लियस हैं और इसमें भी 2 मैक्रोन्यूक्लियस हैं। अब ये जो सिंगल माइक्रोन्यूक्लियस है ये भी माइटोटिक डिवीजन करके 2 बन जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ 4 न्यूक्लियस हैं, 2 मैक्रो और 2 माइक्रो, क्योंकि इन 2 नीले रंग के माइक्रोन्यूक्लियस ने भी माइटोटिक डिवीजन द्वारा विभाजन कर लेते हैं। और अब यह एक पैरामीशियम में एक मेगा या मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस, इस तरीके से 4 पैरामीशिया बनते हैं सामान्य कॉन्जुगेशन की विधि द्वारा।